अमेरिका की कैपिटल वॉशिगंटन में खड़ा हूँ और ये वाइट हाउस मेरे सामने है। अभी तो कंस्ट्रक्शन हो रही है। यहाँ पर मुख्तलिफ लोग डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे हैं और ये डेमोन्स्ट्रेशन क्यों कर रहे हैं मैं आपको 2-3 लोगों के इंटरव्यूज़ दिखाऊंगा। पहला ये कि फ़लस्तीन के हवाले से यहाँ पर गाज़ा के इशू के हवाले से एक डेमोन्स्ट्रेशन चल रही है और फिर उसके बाद ये एटम बम के ख़िलाफ़ डेमोन्स्ट्रेशन एक शख्स कर रहा है जिसका गॉडफादर का मतलब ये होता है कि किसी ने अपना बेटा अडॉप्ट किया है, उसने शुरू की थी, वो तो उसकी तो डेथ हो गई है। इसका नाम है फिलिपो। उससे आपकी मुलाकात कराता हूँ। 2 साल पहले मेरी फिलिपो से मुलाकात हुई। डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे हैं और इनसे पूछते हैं कि ये डेमोन्स्ट्रेशन कब इन्होंने शुरू की। इनके ग्रैंडफादर जो हैं वो भी ये डेमोन्स्ट्रेशन करते रहे हैं। गॉड ग्रैंडफादर, इसका मतलब ये होता है कि किसी ने इनके बाप को अडॉप्ट किया था और फिर वो तो फोत हो गए, लेकिन उसके बाद he has started and still is doing here, is camping here, and he is basically against all the atom bombs because he kills the people. Let's talk with the Philpo. Philpo, tell me one thing. When did this demonstration happen? Okay, in 1978, November 1978, my godfather started doing 78. He started doing a picket sign protest 5-6 days a week for about 5, even up to 7 hours a day. He kept that going until late 79, early 80, and then he went and traveled a portion of the world. And when he came back, he continued doing that 5 or 6 days a week for a good amount of hours, and then he had an epiphany to start it as a 24-hour day. When did he die? January 23rd of 2009. And after that, you started again? No, I didn't start it. I was there well before he died. So what happened is that when he was diagnosed with respiratory cancer, that was in 1997, and then I started helping him more in 1997. I was already helping even before that. You were helping before? Yeah, I was helping before that, but by 97, when he got the respiratory cancer, I started helping more, and then when he died, of course, then it became Concepcion, and because Concepcion was still alive, so she was still helping us do 7 hours. Most of the days of the year, I'd say if she did 350 days of the year. Full time you are here? Yeah, I mean, I have volunteers that help me out too, like to get food, use the bathroom, get a little rest. Why are you doing this? The people out there, they're not going to listen. The government will not listen. India, Pakistan has bomb, China has bomb, Sure. America, England, and all that countries has nuclear. I'm going to tell you why I do it, brother. I do it because there's a little girl in Bangladesh, there's a little boy in Australia, there's a senior citizen lady in Finland, and there's an old blind man in Ecuador that are having human rights violations and are getting tortured by their governments. So therefore, I do it because of human rights, the dignity of human beings, that nobody should be killed as a non-militant. And that's why I do it. Because my problem now, I've been in a wheelchair for well more than 2.5 years. So tell me one thing: the Donald Trump been elected as a president after that, all the controversies. What do you expect from him? Do you think he's going to call you and talk about you because you've been sacrificing your time for the humanity? What I expect of him? Yeah, that's it. No, There will be no changing. No, because, okay, now his Congress said that they didn't declare anything a war, but he dropped the Mossad, he dropped the mother of all bombs, he invaded Iran, but his own Congress decided not to declare them a war. So people say he never had a war on his watch, but everyone will call Obama and Biden during the first, when Biden was vice president, they'll call them war hawks. They only continued the war of George Herbert Walker Bush and Dick Cheney. So it doesn't matter if it's Republican and then Democrat and then Republican, and then the Democrat Biden pulled the United States out of Afghanistan only 2 years ago. So it doesn't matter if it's Republican and then Democrat and then Republican and then the Democrat Biden pulled the United States out of Afghanistan only 2 years ago. So it doesn't matter if it's Republican and then Democrat and then Republican and then the Democrat Biden pulled the United States out of Afghanistan only
7 months into his administration, but he did it in a very wrong way to do it. And there's still some troops still in Iraq, so the Iraq thing isn't completely settled anyway. What did you say about Kashmir? You heard about Kashmir? What do you think about it? Well, I know that part of Kashmir is in Pakistan, part of Kashmir is also in India. Kashmiris come out here all the time talking to me about the Kashmiri situation, and also about like remember about 4.5 years ago, 6 years ago, the Indian farmers movement, where Modi wanted to control all the cash cropping of the farmers and give them a settled amount, which at the time looked like an okay amount. But in the 20th year of the program, it was going to be that the amount wasn't going to be raised. If the amount isn't raised, all that needs to happen is a massive inflation. And now what looks like a good deal for the farmers, 5 years later, 15 years later, and they have this 20-year contract. So if they put into it at a 4% increment per annual, it could help out the farmers to have said, oh, well, there is something for in case of inflation for a little bit of help. But in that program, we know, do things cost the same 20 years later? Are you supporting free Kashmir? Yeah, I want a free Kashmir. I mean, I have a Khalistan flag right there, brother, too. So What is your thought about Middle East crisis? Middle East? What should it be happen next? Well, a lot of land was taken away from people that were ethnically Middle Eastern, and what's happened is, as the DNA swab tests that can now prove if you have any blood from anywhere in the Middle East, as it started coming back that over 46, it was either 46.8 or 48.6% of the people that were taking the swab test were not from the area of Palestine/Israel. So even on them, 37% had no blood lineage at all of the Middle East, anywhere in the Middle East. So I do. You support free Palestine? Yeah, free Palestine. Thank you very much, Filippo. It's nice talking to you. God bless you. And I hope whenever I will come to England, yes, stop genocide in Gaza. Thank you very much. You're welcome, brother. What's your name, sir? Steve Delaney. And why you are here and you are alone? There is a poster I can see, Free Palestine. Yeah. Since when you are doing this? Because Zionism is wrong, and my father worked at the Pentagon, and my sister worked there. They were never injured, but I knew we were on the wrong side about Zionism, because we all came from the Middle East. The whole world can't move back to the Middle East. According to National Public Radio, Wikipedia, Sovereign Web page, Forbes magazine, and Google, you have to be born in a country to be a citizen. Let's go through this again. We all came from the Middle East. You know, if we all came from Ethiopia, 8 billion people cannot go back to Ethiopia. It's up to the people who live there. Those Jews are victims of German Christians. And those Arabs are conquered by British Christians in evil fashion. That's sheer hypocrisy. And that is really unfair. What you could do is you could make all the West Germans move to East Germany and give the Jews in Israel West Germany and move them, and they could have an Israel in Europe. Or you could bring some of them to America and we can share any resources we stole from the American Indians. But that is totally unfair. National Public Radio did point that out, that the real rule is you have to be born in a country to be a citizen. The English can't move back to England, blacks can't move back to Africa. I'm half English, the evil English. We conquered a quarter of the globe from 1920 to 1947. And what is your religion? I don't believe in any religion. I was raised Christian. Okay. But are you hopeful that Donald Trump now is a elect president and there will be a change and there will be a ceasefire? I think it's very unlikely. Unlikely? Donald Trump he's half German, and I feel bad about this. He would overcompensate the Jews. And I think that we have to remember that our German Americans were loyal to the man. Chuck Yeager, a World War II combat hero, he fought the Germans, killed
and killed off a lot of his ethnic group, the Germans, because they were invading France and every other country in the world. So I think, you know, I'm not too hopeful. Right. I hope he does, but Thank you very much. it's Steve, yeah. You Steve, yeah? Yeah. And you are living here in Washington, D.C.? I live next door, yeah, in Virginia. So And you do every day, or you come and go? I come once a week, and you know, I welcome the government of Israel to talk to me. I've sent them 9 letters, and they've never answered. And that's another story. You know, people that are evasive and won't consider the other side, that tells me they're totally unfair. And it also suggests to me that they're on the wrong side, and they sort of know it. Furthermore, they wouldn't bet their souls that they were right. I bet my soul, and I'm not German, I'm not Jewish, and I'm not Arab. I'm an independent. You are not a religious person, but you believe that there should be a Right. peace, and the peace is the Right. main thing for a humanity. It's I call it independent verification. Palestine, Yeah. Thank you. Thank you. God bless. You too. जो वाइट हाउस है अमेरिका में, जो सदर की सरकारी रिहाइशगाह है, वहाँ पर नए मेहमान की आमद है, और वो है डोनाल्ड ट्रंप, प्रेसिडेंट इलेक्ट, जो 20 जनवरी को अपने ओहदे का हल्फ उठाएंगे, और जो बाइडन साहब यहाँ से रुखसत हो जाएंगे। तो नए मेहमान की आमद के सिलसिले में बहुत सारा काम होना शुरू हो गया है। यहाँ पर कंस्ट्रक्शन है। पहले तो ये होता था कि हम बिल्कुल वाइट हाउस के सामने जा सकते थे, वहाँ इंटरव्यू कर सकते थे, पिक्चर्स बना सकते थे, लेकिन उसके सामने हम बैठे हुए हैं, धूप बहुत निकली हुई है। और मैं चूँकि अमेरिका में इलेक्शन के सिलसिले में आया था, मेरे अपने लिए बहुत कुछ लर्निंग का प्रोसेस था, और फिर ये भी देखना था कि वैसी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ के बाशिंदे होने के, पाकिस्तान की, इंडिया की, या बांग्लादेश की, या साउथ एशिया की बात करें, अंडर डेवलपिंग कंट्री जो है, तो क्या है जमहूरियत, और क्या है कॉन्स्टिट्यूशन, और किस तरह का सिस्टम होता है, वोट का कैसे सिस्टम होता है। तो इस हवाले से मैं अपने लोगों को से भी इंटरव्यूज़ कर रहा हूँ मुख्तलिफ हवालों से। तो आज मेरे साथ यहाँ पर जनाब आयात खान साहब मौजूद हैं, जिनका आबाई तल्लुक रावला कोट आज़ाद कश्मीर से है। रावला कोट की बात अगर करें तो कश्मीर कहते हैं जन्नत बेनज़ीर सरज़मीन का एक टुकड़ा है। इस सरज़मीन के ऊपर एक जन्नत का टुकड़ा अगर कहीं ढूंढें तो वो कश्मीर है, और कश्मीर में भी अगर सबसे खूबसूरत जो जगह है वो रावला कोट है, इस वजह से कि एक तो यहाँ वहाँ पर खूबसूरती बहुत है, दूसरी जो यूनिक बात है, मुनफरिद बात रावला कोट की है, वो ये है कि वहाँ के लोग जो हैं बहुत पढ़े लिखे हैं। बात हुए, और डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद क्या होप है कि दुनिया में अमन कायम होगा, फ़लस्तीन का मसला हल होगा, जंग ख़त्म होगी, और यूक्रेन की जंग ख़त्म होगी, फिर इंडिया पाकिस्तान के रिलेशनशिप कैसे होंगे, कश्मीर का मसला के बारे में क्या होगा। तो ये सवालात बहुत सारे लोगों से मैं कर रहा हूँ, तो मैं इनसे भी जो है वो पूछता हूँ कि ये आयात साहब इस हवाले से क्या कहेंगे, क्योंकि ये बासी हैं वाशिंगटन डीसी में, और ये मेरी ही एज के हैं माशाल्लाह। तो उम्र गुजर गई हमारी तकरीबन, और वो जवानी अब जो है वो कहते हैं ना असर के वक्त पर जो है ना वो दोपहर, डलती दोपहर है, शाम होने वाली है। तो ये क्या कहेंगे इस हवाले से जी, तब्दीली क्या तवक्को करें? बेहतर में होगा ये। आपने वोट दिया इस वक्त? वोट दिया है जी। ट्रम्प को दिया है या किसी और को? ट्रम्प को दिया है। क्यों दिया है ट्रम्प को? बिकॉज दूसरे जो आके तो जंगें शुरू करते हैं, ये इसने कहा है कि मैं जंगें ख़त्म करूँगा, अच्छा, और अमन लाऊंगा पूरी दुनिया में, इस वजह से। तो ये गाज़ा का इशू तो बहुत उठा हुआ है, यहाँ पर बड़े डेमोन्स्ट्रेशन भी होती हैं, आप देखते रहते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, क्या कहेंगे? आई थिंक बेहतर होगा, ये बेहतरी पैदा करेगा ट्रम्प। अच्छा, तो आम लोगों से आप जब बात करते हैं, उनसे मिलते हैं, तो उनका क्या ख्याल है कि वाकई हम डोनाल्ड ट्रम्प पाकिस्तान की भी मदद करेंगे? इमरान खान चूँकि जेल में है, बहुत सारे लोग अब ये कहते हैं कि इमरान खान शायद छूट जाए उसके आने के बाद। होप तो यही है। अच्छा, छूटेंगे। अच्छा, बाज़ लोग पाकिस्तान में ना ये खबरें चलाते हैं कि ये जो ओवरसीज बसने वाले पाकिस्तानी हैं, ख़ास करके अमेरिकन जो पाकिस्तानी हैं, इनके पेट में खामखा मरोड़ उठता है, और ये पाकिस्तान के इंटरनल मामलात पे जो है ना इंटरफेरेंस करते हैं। जाएँ, आपने नेशनैलिटीज़ ले ली हैं, अपने काम से काम रखें, लेकिन अब क्यों इंटरफेरेंस करते हैं, लॉबिंग करते हैं यहाँ पर पाकिस्तान के हवाले से, इंसानी हकूक़ के हवाले से? इस हवाले से आप क्या कहेंगे? हम पाकिस्तानी हैं, हमें दर्द होता है, तकलीफ़ होती है जब वहाँ किसी को मुसीबत में देखते हैं, इस वजह से।
बहुत शुक्रिया। पेंटागन की बिल्डिंग के बिल्कुल बाहर खड़ा हूँ, ये मेरे सामने आप देख सकते हैं। मैं पेंटागन यूएस डिपार्टमेंट का डिफेंस हेडक्वार्टर है। आप ये समझ लें कि जो डिफेंस के जितने भी यहाँ पर इश्यूज होते हैं वो यहाँ डील किए जाते हैं। लेकिन पेंटागन जो है ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर आता है। डिफेंस के अमूर यहाँ पर तय किए जाते हैं। साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब को यहाँ गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया था और उन्हें 21 तोपों की सलामी दी गई थी। कोई भी जो हेड ऑफ स्टेट होता है या मिलिट्री के जितने भी चीफ आते हैं वो उनकी ख्वाहिश होती है कि वो कैपिटल हिल में जाएं, उन्हें रिसेप्शन भी दिया जाए, गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया जाए और डिफेंस के अमूर जो हैं वहाँ पर उनके साथ डिस्कस हों। वाशिंगटन जिसे दुनिया का कैपिटल कहते हैं उसमें ये पेंटागन की बहुत अहमियत है। मैं इस वक्त कैपिटल हिल के बाहर खड़ा हूँ जो इनकी पार्लियामेंट है। अमेरिका का ये कैपिटल है, ये उसकी बिल्डिंग है जहाँ पर फैसले होते हैं। 435 इनके अरकान हैं जो इस पार्लियामेंट के अंदर बैठकर फैसले करते हैं। हाँ, 100 इनका सेनेटर है जो दूसरी बिल्डिंग में बैठता है, लेकिन यहाँ पर जो 435 हैं उनके इंतखाबात होते हैं, उस दफ़ा भी हुए हैं और डेमोक्रेट्स को शिकस्त हुई है और पार्टी जो डोनाल्ड ट्रंप की है उसने जीता है। बज़ाहिर तो ये अमेरिका का कैपिटल है, लेकिन यहाँ पर दुनिया के बारे में फैसले होते हैं और दुनिया में क्या होना है, क्लाइमेट की चेंजिंग है, खारजा पॉलिसी है, इंसानी हकूक़ है, इंटरनल इनके क्या मामलात होंगे, उनके सारे फैसले यहाँ पर होते हैं और यहाँ से ही दुनिया को कंट्रोल किया जाता है, यहीं से अमेरिका को कंट्रोल किया जाता है। और बज़ाहिर आपको लगता है कि सदर के पास बहुत अख्तियारात होते हैं, लेकिन ये भी जो है ये अपनी करारदादें मंजूर करते हैं, कानून साजी करते हैं। 200 साल पुराना इनका कॉन्स्टिट्यूशन है, उस पर पैरा देते हैं, उसके मुताबिक चलते हैं और ये डायरेक्ट आवाम की वोटों से इलेक्ट होकर आते हैं। यहाँ सेनेटर भी इलेक्ट होते हैं जो 100 हैं। ये नहीं होता कि आप पैसे दे दें किसी पार्टी को, फंडिंग कर दें या रिश्वत दे दें, दुबई में सौदा कर लें और सेनेटर बन जाएं, बल्कि यहाँ पर सेनेटर भी आवाम की वोटों से ही जीतता है। और ये जो कांग्रेसमैन है या जो पार्लियामेंटेरियन है ये भी आवाम की वोटों से ही जीत कर आते हैं। यहाँ पर इलेक्शन हर मामले पर होता है और जो आवाम की राय होती है उसी के मुताबिक यहाँ पर लोग आते हैं। यहाँ कोई वडेरा नहीं है, कोई जागीरदार नहीं है, कोई मारूसी सियासत नहीं है। बहुत सारे लोगों से मैंने जब बात की तो यहाँ पर पार्लियामेंट जो होती है, ये कैपिटल हिल में जो लोग बैठते हैं ये आवाम की वोटों से ही सामने आते हैं और आवाम की वोटों से मुंतखब होते हैं, इसलिए वो अपने फ़ैसलों में आज़ाद होते हैं। और इनकी जो एलिजेंस है, जो ओथ है, जो वफादारी है, वो सिर्फ यहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन के हवाले से है।